Good evening, everyone. I am Advocate Aksa Seher, welcoming you to our Nani Palkhiwala's Wednesday Law Club. Our meeting is about to start, so wait for a short. Today we are going to have a live interview session with with learned senior advocate Mr. Vikas Singh. Before we start, I would like to give a brief introduction of our Nani Palkhiwala's Wednesday Law Club founder, Mr. Jayprakash Somani. Mr. Jayprakash Somani is a Supreme Court advocate and also an insolvency professional. Can see his 32 books on Supreme Court leading cases on Amazon and Flipkart. He is awarded with Priyadarshini Indira Gandhi National Award and Global Achievers International Award. And now, I would like to welcome our today's esteemed guest, Mr. Vikas Singh, by giving an introduction. Mr. Vikas Singh is an eminent senior advocate practicing in the Honorable Supreme Court of India with standing of over 31 years at the bar. He is currently the President of Supreme Court Bar Association and is serving the term for the second time. He has also served the office of Additional Solicitor General, Government of India from 2005 to 2008. He is perhaps the only lawyer associated with the causes of 3 temple cases in India, that is Ayodhya Ram Mandir, Guru Ravidas Temple at Tughlakabad, and Bal Yogi Shri Sadanand Maharaj Ashram in Maharashtra. Winning all 3 of them, he also handling the Sushant Singh Rajput case, which is now in the hand of CBI to resolve its murder mystery. Mr. Singh is also a member of the Faculty of Commerce and Business University of Delhi. He is very active in social causes, especially in providing help to the disabled and involved with All India Deaf and Dumb Society as well as in the treatment of handicapped children. He has been a person, whereas educating a girl is educating a family. Mr. Singh follows a strict fitness regime and his day starts with a 2-hour yoga session. He is also an avid tennis player and was also former president of International Tennis Club of India. It is an honor to have such great personality. Welcome, sir. Now I hand over the meeting to Mr. Jayprakash Somani, our host of this meeting for today. Thank you. Thank you, Aksa, for giving nice introduction. And on this occasion of Navratri and also the occasion of Ramzan month, ये पवित्र दिन में हमारे तो ये पवित्र महीने में हमारा ये कार्य शुरू हुआ है। नानी पालखीवाला ये मेरे आइडल है लीगल प्रैक्टिस में। मैंने उनको कभी देखा नहीं है, लेकिन उनकी इतिहास देखा है, उनकी बुक्स पढ़े हैं, उनका आर्गुमेंट्स देखे हैं। केशवानंद भारती ये जजमेंट में नानी पालखीवाला के जिस ढंग से आर्गुमेंट हुए, पूरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो साइटेशंस दिए हैं, लिटरली ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी के नाम पे, इन द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी वी शुड स्टार्ट समथिंग, सम वेंचर, ऐसे दिमाग में था और ये यहाँ है। और पहला पुष्प जो है ये विकास जी हमारे पास हमारे साथ है। विकास जी हमारे SCBA के मेंबर, हमारे प्रेसिडेंट है। बहुत अच्छा उनका योगदान है, बहुत अच्छा काम है, इंट्रोडक्शन में काफी दिया है। चलो अभी हम विकास जी के साथ गुफ्तगू करते हैं। आई विल कंडक्ट दिस प्रोग्राम इन मिक्स्ड लैंग्वेजेस सो दैट ऑल पब्लिक विल गेट द इंटरेस्ट प्रॉपरली। तो कभी हिंदी कभी इंग्लिश ऐसे करेंगे तो आपको भी मजा आएगा और सुनने वालों की भी मजा आएगा। थोड़ा लाइव यूट्यूब पे करने में कुछ अभी प्रॉब्लम आ रहा है टेक्निकली, इसलिए मैं अभी कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये रिकॉर्डेड पीस बाद में हम यूट्यूब पे डाल देंगे और लिंक भेज देंगे जो आज नहीं ज्वाइन हो पा रहे। चलो दोस्तों, हम विकास जी को रिक्वेस्ट करते हैं
विकास जी, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। यस, और विकास जी, मेरा पहला सवाल है कि फ्रॉम चाइल्डहुड टू करंट पोजीशन, थोड़ा सा आपका जर्नी के बारे में बताइए। So my journey in this sense is a little varied because मेरे परिवार में कोई वकील नहीं था। So my father was a bureaucrat, so मेरे को कोई इस प्रोफेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं थी। When I was school, I had a very good friend with whom I used to play tennis from class 6. तो उसके फादर वहां पे जज थे, and he later on became Chief Justice of the Patna High Court. So because of that interaction with him, I could see this profession as also one of the profession which I can think of when I grow. And उसी दोस्ती में ये लगा मेरे को कि अच्छा प्रोफेशन है, मेरे को लॉयर बनना चाहिए। So I started studying with the purpose of becoming a lawyer. जब ग्रेजुएशन पढ़ने का टाइम आया तो आई हैड एन ऑप्शन ऑफ डूइंग बीए ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स। उस जमाने में 5 ईयर कोर्स नहीं आया था। तो माय फादर सेड दैट साइंस विल ऑलवेज हेल्प यू इन फ्यूचर, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ सिंपल बीए वी शुड डू बीएससी। That will, sort of increase your analytical ability, and you will become more, sort of you'll be able to understand things much better if you are a science background. Yes. Because of that only I joined chemistry honors for my graduation. और ग्रेजुएशन में मेरा 1 साल नुकसान हो गया बिकॉज मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज भी आया था एडमिशन के लिए। मेरे को मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन मिल गया था 1976 में। केमिस्ट्री नहीं मिला था लेकिन मैथ्स मिल गया था। तो मेरे को स्टीफेंस में अगर पढ़ता तो मैं 79 में पास आउट करके 79 लॉ ज्वाइन कर लेता। लेकिन उस समय बिहार में इमरजेंसी था, सेशन सारे टाइम पे आ गए थे। माय फादर वाज पोस्टेड इन पटना, उन्होंने कहा कि यहीं आ जाओ, यहीं से ग्रेजुएशन कर लो। सो आई वेंट बैक टू पटना बिकॉज हमने सोचा केमिस्ट्री भी मिल रहा है वहां पे साइंस कॉलेज में। आई वेंट बैक टू पटना। जब सेशन लेट होने लगा तो देन आई वेंट टू उड़ीसा टू सेव द सेकेंड ईयर। 1 साल तो लॉस हो ही गया था। एंड रेवेंशो कॉलेज में जाके मैंने अपना लास्ट ईयर पास किया। देन आई केम टू कैंपस लॉ सेंटर इन दिल्ली एंड डिड माय ग्रेजुएशन इन 1983। लेकिन इंटरेस्टिंग ये हुआ कि 81 में एक जो नौकरी का मेरे एक दोस्त ने एप्लीकेशन लगाया था स्टील अथॉरिटी का। उस समय 20 साल में स्टील अथॉरिटी में अप्लाई कर सकते थे, जो और कहीं नहीं कर सकते थे। हर जगह 21 साल चाहिए होता था, जैसे स्टेट बैंक है, आईएएस है, सब में 21 चाहिए। तो मेरा एक दोस्त था, वो बोला कि 16 रुपए का फॉर्म मिल रहा था स्टील अथॉरिटी का प्रोबेशनरी अफसर का, 20 साल चाहिए, हम लोग एलिजिबल है, दोनों भर देते हैं। तो मैंने भर दिया उसके कहने पे। मेरा हो गया, उसका नहीं हुआ। इनफैक्ट इत्तेफाक की बात है कि वही दोस्त मेरा बाद में जाकर के आईएएस बना और स्टील सेक्रेटरी होकर रिटायर किया। मेरा हो गया तो मेरे फादर ने कहा, मेरे को जाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो फादर ने कहा कि अभी लॉ में 2 साल बाकी है। तो उस जमाने में आप दोनों मतलब मैनेज कर सकते थे, कर तो नहीं सकते थे उस समय भी, लेकिन मैनेज कर सकते थे। तो कुछ मेरा ऐसा लग हुआ कि कुछ मैंने काफी लीव लिए, छोड़ के आ गया। कुछ दिन मेरे को 1 साल 0 ईयर डिक्लेयर हो गया, तो इसलिए अटेंडेंस का कोई इशू नहीं था। तो मैनेज करके मैंने 2 साल नौकरी भी किया और लॉ भी पढ़ाई की। लेकिन 2 साल की नौकरी के बाद सीनियर हो गया, स्टील अथॉरिटी में मार्केटिंग में था। काफी वो इम्पोर्टेंट जॉब था। गाजियाबाद में पोस्टिंग हो गई, बड़ा मतलब 100 करोड़ की मैं सेल करता था उस जमाने में 1 साल में। तो एक जैसे एक इम्पोर्टेंस मिलता है ना बहुत यंग एज में, तो उस इम्पोर्टेंस में नौकरी करता रह गया। मैं 90 तक करता रह गया, 1990 तक। मेरा आसाम पोस्ट हो गया, फिर आसाम से कलकत्ता पोस्टिंग हुआ। कलकत्ता में जब पोस्टेड था तो मैं तिरुपति गया, तो वहीं से एक प्रेरणा आई मेरे को कि मेरे को रिजाइन करके वकालत करना चाहिए। तो 89 में नवंबर में मैं सामान वान पैक करके दिल्ली आ गया और छुट्टी थी मेरे पास, लीव था। तो 6 महीने लीव लेकर के वकालत में एक हमारे उस समय एक लॉयर थे मिस्टर एल.आर. सिंह, उन्होंने हमारा केस भी हैंडल किया था बहुत पहले, मेरा फैमिली केस। उनके पास आ गया मैं, उनके रिसर्च करने लगा।
और मेरे को याद है ये काशी विश्वनाथ टेम्पल का टेकओवर का केस वो कर रहे थे, और मैं उसका फाइल लेकर के मैं उसको रिसर्च करने लगा। तो मैं उन दिनों में मैं गांव गया, तब तक मैं वकील नहीं बना था। मैं गांव गया तो मैंने जितने भी आर्टिकल 25, 26 के जजमेंट थे, सब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सब 300, 400 पन्ने के, सबको 10-12 जजमेंट में सारे अपने दोस्तों से लेकर के मैं चला गया गांव में, जाके सारों पे मंथन किया। मंथन करके आया तो सीनियर इम्प्रेस हुए। तो पीपी राव को उन्होंने ब्रीफ कर रखा था सीनियर में, तो कॉन्फ्रेंस में इवन विदाउट बीइंग अ लॉयर ही यूज्ड टू अलाउ मी टू स्पीक, और मैं कॉन्फ्रेंस करता था सीनियर के साथ इवन विदाउट लॉयर। तो ये सब करके कॉन्फिडेंस एक बना। तो जून ऑफ 1990 में मैंने रिजाइन किया, और रिजाइन करके फिर वकालत ज्वाइन किया। और वकालत ज्वाइन करने के बाद उसके बाद तो स्टोरी टचवुड, गॉड इज वेरी काइंड। इनफैक्ट मेरा पहला दिन था सुप्रीम कोर्ट का, पहला दिन जुलाई में, जब सुप्रीम कोर्ट खुला रीओपनिंग के बाद, वेकेशन के बाद। तो एक दिन पहले मैंने, 2 दिन पहले मैंने अपने सीनियर से कहा कि मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था स्कूल में, एक बार एलोक्यूशन का ट्राई किया था। तो एलोक्यूशन में तो मेरा पैर हिलने लगा था, माय फीट वाज शेकिंग। तो आई वाज वेरी एप्रीहेंसिव कि मैं बहस कर पाऊंगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरे सीनियर ने मेरे को बहुत ही टफेस्ट मूट कोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को दे दिया। मेरे को 3 केस दे दिए बहस करने को। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माय करियर इन सुप्रीम कोर्ट, आई वाज हैविंग 3 केसेस टू आर्ग्यू, एंड आई स्टिल रिमेम्बर पहला केस मैंने बहस किया जस्टिस वेंकट चलिया के सामने। नौकरी से छोड़ के आया था तो मैं उनको सर सर बोल रहा था। बड़े पेशेंटली सुनते रहे। सुनने के बाद उन्होंने सॉरी सर करके फाइल नीचे रख दिया। तो मैंने कहा नहीं मेरे को आई हैव टू से समथिंग एल्स। तो उन्होंने कहा आई एम सो सॉरी, फिर से फाइल ले लिया, फिर सुनते रहे। So then he ultimately also dismissed the matter and he said sorry sir. तो मेरे सीनियर पीछे से मेरा सुन रहे थे बहस। तो बहस में तो कोई उन्होंने कमी नहीं निकाली, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप सर क्यों बोल रहे थे। मैं नौकरी के हैंगओवर से आया हूँ, तो अभी वो माय लॉर्ड बोलने की आदत नहीं बन पा रही है। फिर उसके बाद से फिर अगले मैटर से फिर माय लॉर्ड बोलना शुरू किया मैंने। और वकालत में भगवान ने बहुत साथ दिया, मैं तो यही कहूंगा। और यही हमेशा ये इंटेंशन रहा कि जो भी क्लाइंट आए उसको किस तरह से रिलीफ दिलाएं। मैं यही बहता हूँ, व्हेन आई गो टू एनी लॉ कॉलेज, आई टेल द लॉ स्टूडेंट्स ऑफ टुडे that your effort should be to get into the shoes of the client and treat his pain as your own. If you do that, then there is no way of not getting successful. And I'll give a very small example which happened in my service career. I was posted in Kanpur, and एक audit para आया, to justify some action taken some 7-8 years back. Okay. So I was given, my branch manager gave me the chance to, the responsibility to write the justification. Somebody must have taken that decision 10 years back or 8 years back, but I was to justify that decision. So I did a lot of research in that matter, those facts जो निकाले, और मैंने पूरा एक लंबा चौड़ा justification बना दिया। तो वो justification zonal manager के पास जाना था। I went with the justification to the zonal manager's office. तो वो पढ़ के फिर थोड़ा हंसने लगे। तो मेरे से कहा विकास, यू मेड दिस? आई सेड यस। दिस प्रॉब्लम, दिस क्वेरी इज ऑफ अ टाइम व्हेन आई वाज द ब्रांच मैनेजर, एंड दिस इज माय डिसीजन। आई डिड नॉट रियलाइज दिस, मैंने नाम नहीं देखा था, एंड आई डिडंट रियलाइज कि उन्हीं के पास मैं जा रहा हूँ एज जोनल मैनेजर। ही सेज द जस्टिफिकेशन दैट यू हैव गिवन इन दिस ऑडिट पैरा रिप्लाई, to be honest, I had not thought of all this by taking this decision. So many a times, you have to get into the shoes of the client, and many a times you have to think, more than what the client's pain, the way he's expressed his pain, and try and also innovate many times to fit it into a proper legal, principle, and ensure that he gets justice. So if you work for the justice, for the relief of your client, and not think of money primarily, money automatically comes. I'm not saying that money doesn't come, but money comes with a lot of satisfaction, because people who feel that you've done their case properly,
If they pay you money and that money, you feel more satisfied in earning that money. I recount one of those large number of cases, where my clients have lost their cases and paid me money after 6 months or 1 year by a demand draft. And that's very, very heartening. It feels that whatever you're doing is doing in the right direction. वेरी नाइस विकास जी, बहुत अच्छा आपने इनपुट दिया। मैं लॉ स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूं कि हमने सीनियर लॉयर का जो एक इंटरव्यू रखा है, द पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यू इज टू गेट यू द एंटायर नॉलेज कि भाई एकदम स्क्रैच से ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। ये गाइडेंस मिलने के लिए ये पार्ट था। और अभी जो लीगल फ्रैटर्निटी है हमारे पूरे भारत में, जो लॉयर्स हैं, ट्रायल कोर्ट के लॉयर है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनका भी नॉलेज में इनपुट बढ़ना चाहिए, कुछ होना चाहिए। सो सेकंड जो पार्ट हमारा है अभी लैंडमार्क जजमेंट्स का है कि विकास जी ने बहुत अच्छे केसेस में पार्टिसिपेट किया है। कुछ उनके केसेस के या उनको कुछ जो अच्छे लगते हैं ऐसे लैंडमार्क केसेस के बारे में वो हमसे कुछ बातें शेयर करें, ऐसी मैं रिक्वेस्ट विकास सिंह करता हूं। तो कुछ केसेस मैंने सोचा था आपके लिए, आपका क्वेश्चन आ गया था तो मैंने कुछ सोचा था। एक तो इंटरेस्टिंग केस है जो आम आदमी को कंसर्न भी करता है, लॉ स्टूडेंट्स को भी मालूम होना चाहिए, वो है सुशांत सिंह राजपूत का केस। इसमें डेथ हुआ, एवरीबडी नोज डेथ हैपेंड इन मुंबई, ही कमिटेड सुसाइड, दैट इज द एलिगेशन ऑफ द पुलिस, and no FIR was registered by the Mumbai police. And at about 20-25 days of his death, his father met me and he was feeling a little suffocated that Mumbai police is taking it into a completely different direction, calling the entire Bollywood this thing and getting into whether Sushant Singh was sort of discriminated in the industry or not, and which was not really the direct cause of death according to the father. And he may have been discriminated, but he felt that was not the cause of death. So he came to me and he said that I don't hope for any relief from the Mumbai police, and what can you do for me? So I completely understood his whole case, the entire family background, how things, how he got into Bollywood and how he got into which company, etc. After hearing everything and after coming to know that there is a certain amount of criminal misappropriation also happening, because ultimately the father was the only legal heir of Sushant Singh Rajput. And after his death, whatever he left behind would be of the father only. And secondly, the father, when he will die, his son, he had only one son, so son would have taken his power. So these are consequences which definitely would happen in Patna. So on these, because consequence में, cause of action में, criminal law में part of cause of action होने से भी FIR हो सकता है. ये सब करके मैंने FIR पटना में register करवाया, and the matter traveled to Supreme Court. And Supreme Court में बहस हुआ, उनके तरफ से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने भी अपोज किया, रिया चक्रवर्ती ने भी अपोज किया. तो लोग पब्लिक डिस्कोर्स में, डिबेट्स में, बहुत से टीवी डिबेट्स उस समय चले. मेरे आई रिमेम्बर पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स वेयर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सीनियर एडवोकेट्स, policemen, former DGs on debates, and they said that this FIR is completely without jurisdiction and could not have been registered in Patna. So there was a misconception. The misconception was that they were thinking that what I have got registered is a zero FIR. Now, zero FIR is something completely different. Zero FIR ka concept hai, like in the, if you remember this Asaram Bapu case, this girl suffered whatever she suffered in the ashram. And while she was going home to her home district in UP, in Delhi, she came to a police station and she got this FIR registered. Now, in this case, not registering the FIR where Asaram Bapu's ashram was situated was because he has such a huge influence in that area that it would be impossible for him to get the FIR registered there. So in such situation, and especially it happens to cases of women,
that they have the liberty to register a zero FIR, and that FIR that ultimately gets transferred to the jurisdictional police and the jurisdictional court for further inquiry and trial. So they were all thinking that this is a zero FIR which I've got registered. My case was not of a zero FIR. My case was that there is part of cause of action, and the cause of action is that if there is a criminal, because she had been using his money. He also had said at some stage that 2-3 crore she was using his credit card. She was spending money from his account. She had employed people from his whom she was paying salary. So there was a large amount of money which she had spent, which he had said that it was a criminal breach of trust. And so that way, and also that he resides in Patna, and that if he had been alive, he would have lit his fire. So that consequence also would happen in Patna. So these grounds, the FIR was registered in Patna, and the Patna FIR was upheld by the Supreme Court. And the Supreme Court said that yes, if part of cause of, and this is a very live situation, it can happen to anybody. A migrant worker from Orissa may go, or from Assam may go and work in Mumbai. And if he is killed there, just imagine a small-time worker from a remote place going to Mumbai or a big city like Delhi and fighting a case, registering a case there. Just the harassment. So rather than the harassment to the accused, the harassment will be of the complainant, which is not the intention of the law. The intention of the law is to facilitate the complainant as much as possible. If the accused has to travel to Patna for a trial, so be it. That is not a good ground for. The other case which I successfully won in the Supreme Court is, of course, Vinod Dua. In Vinod Dua, the larger argument, and I'm very happy in the way judgment was delivered by the bench of Justice Lalit, that when you register a FIR, especially of sedition, against a person for his what is his fundamental right of free speech under Article 19(1)(a), then the registration of the FIR amounts to suspension of the fundamental right. Because if the inquiry will be allowed to go on, how will any journalist fearlessly say whatever he feels is correct with regard to the prevailing circumstances? And very interesting judgments I had quoted of the Supreme Court, Indian Supreme Court, some of them referring to the US Supreme Court also. Very nice. That if there is, if there is a growth of an obnoxious branch of this kind, it is rather better to let the growth happen than to prune it. So even if somebody goes a little astray in speaking a little more than what is maybe the actual truth, that should never be a ground to suppress the person, because a healthy democracy requires all kinds of views to be brought before the people. And the people should have a choice which view they will accept and which view they will not accept. So to curb one particular point of view completely as access to the people is a very, very serious infringement of the fundamental right. And the third case, of course, which I didn't appear, was on the cryptocurrency. The Reserve Bank of India had said that banking transaction cannot be used for purpose of buying a cryptocurrency. And that notification was challenged, and the Supreme Court said that. So actually, the judgment is very, very. I would anybody dealing in cryptocurrency or having an interest in cryptocurrency and Bitcoin, etc., definitely read that judgment, because the kind of knowledge you will get in that judgment. Yes, and I think that is included in leading cases examination of AOR also. So I don't know about that. So knowledge is so much of knowledge you will get of how the cryptocurrency started and its origin, and how it has traveled in various jurisdictions, which jurisdictions consider it in what manner, where it has been legitimized, where it has not been legitimized. It's really, really an eye-opener. And especially cryptocurrency is one area where,
an average person has very little knowledge, because you hear of a Bitcoin which was $0.1 10 years back has become $64,000. So it's like something. It's like a amazing story of an asset becoming so expensive in a short period of time. So you can have a real estate, आपका 10 करोड़ का मकान 20 करोड़ हो जाएगा 10 साल में, या 50 करोड़ भी हो जाएगा, ये तो सुना था। 10 करोड़ का आपका 10,000 करोड़ हो जाएगा इन 10 साल में, ये कभी नहीं सुना था। So it's basically a new asset class which has been considered after the Lehman Brothers crash, and people thought that apart from real estate and bank deposit or shares or gold, which are the traditional forms of investment, this was a fifth class of investment which was brought in at that point of time, and that class ko kaise deal kiya as judgment mein, it's really very informative, and for any student of law, it will be really a great piece of knowledge. One more case I'd like to point out is about the CPC, where the intricacies of CPC was, of course, that case also I argued in Supreme Court. It was that Malik Chand versus Manik Chand. Manik Chand was that famous gutka brand from who used to run that Filmfare Award promote karta tha. And my client was Malik Chand. But how Malik Chand, my client won because the Malik Chand suit was, handled with so much of procedural irregularities. The trial, right from the trial till the Supreme Court. My client won basically on that. So it's again a very big eye opener that you should not, take up a case without understanding a particular procedure completely. And I remember when I did my first civil suit in 1992, because I was practicing in Supreme Court, I got a case in the Delhi High Court, filed a civil suit, and I had never filed a civil suit before that. So I wanted to be sure that my suit is properly drafted and all the ingredients are taken properly. So I was told that there is a clerk, a typing clerk, Khurana, of course, he's no more now. So he used to sit in the typing pool in the High Court. So somebody said, he's an expert, you go and show him your plaint and he will tell you if it is properly drafted or not. And I remember sitting hours with him, with Khurana. And mind you, I had already put in 9 years of service then, and 2 years of lawyer as a lawyer also, and then sitting with a clerk to learn. Because I didn't want my client to suffer because of my lack of knowledge of procedures. So Malik Chand is another case where people will realize that a big case, very big case, was lost completely because of the Malik Chand lawyers not following the procedure provided in the CPC and completely stumbling on that. So these are some cases which I thought I'll just talk with you. Very nice. बहुत अच्छा इनपुट मिला है। और सुप्रीम कोर्ट में हम साथ में काम करते हैं, साथ में रहते हैं, चाय साथ में लेते हैं, लेकिन इतना बहुत अच्छा डिस्कशन, इतना अच्छा नॉलेज ये पढ़ने से मुझे भी मिला है। सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। और अगला मेरा सवाल है कि यू हैव गॉट द चांस टू वर्क एज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर सम इयर्स। टेल मी सम मेमोरेबल योर एक्सपीरियंस regarding this post. So when I got the position of additional solicitor general, initially, as it happens to anybody who comes to Supreme Court as in this office, there is an inertia of central agency, you becoming, a person with, a lot of people wanting to brief you. But within a couple of months, that changed completely for me, and I was having probably the maximum number of briefs in central agency. 2-3 things that I learned in my assignment as central agency was that I was fortunate that by that time, in 2005, all these softwares had come. The SCC Online had come, and it was very user friendly. So I remember in central agency where I did as ASG, I did a lot of subjects which I'd never handled before. NDPS, customs, income tax. I'd never done income tax in my life. So I handled that because the central agency requested, because they, like income tax, they started losing some big cases. So
They said, sir, can you do it? I said, I've never done. Sir, aap seekh lijiyega, sir, aap kar lijiye. Pata nahi, they had that confidence. So Mr. R.M. Sharma was there. So he said, please kar lo. Then he started giving me. I had a friend who is now the present ED, Sanjay Mishra. He's a brilliant officer, income tax officer. So I requested him to help me in understanding some of the intricate matters of income tax. And he used to come and help me and, sort of read the brief and tell me what exactly to argue. And I learned. But the main point that what I realized was important was that whenever I did any case, before arguing, I used to definitely go on to SCC online, open that statute, open that section which is involved, and then see all the judgments on that section by the Supreme Court. So once you read the section and read all the judgments that have been delivered on that section by the Supreme Court, you really come to know how the interpretation of that section has evolved with time. And what was the purpose for bringing that section to first place, and then what is the... So in our profession, and that is why I tell youngsters that no point of doing an LLM if you want to get into litigation, because every day when you do a research or you do an argument, and especially in Supreme Court, जिसके बाद कोई कोर्ट नहीं है, उसके बाद तो सिर्फ भगवान है. Yes. आपको एक LLM उस सब्जेक्ट में करना पड़ता है ओवरनाइट. और अगर आप करने को तैयार है LLM ओवरनाइट, तभी इस प्रोफेशन में आइए, अदरवाइज कोई सेंस नहीं इस प्रोफेशन में आने का. बिकॉज so that helped me a lot in my ASG days. Another very interesting incident was that I was representing the Ministry of Environment, and the Environment Secretary came to my office. It was some Mr. Ghosh, I'm forgetting his full name. Actor Ghosh, if I'm not mistaken. So he came to my office and he said that the Supreme Court is wanting to suggest names to be made part of the Forest Advisory Committee. But he says, I don't want that to happen. I said, if you don't want to happen, that will not happen. He says, how can you say that? Supreme Court will say, how can I say no? I said, if you are ready to take a stand, I'm ready to take a stand. He said, no, I'm ready to take a stand. So I went to the Supreme Court, and it was the bench of the Chief Justice, Justice Vikas Sabharwal. And he gave me 3 names that you issue the notification for these 3 names. I said, I'm sorry, you can't tell me which names to include. This is purely an executive function under the statute. It is the central government which has to decide. And the court has no jurisdiction to tell me whom to appoint and whom not to appoint. So Justice Sabharwal, in open court said that so many Solicitor Generals have come, Attorney Generals have come. Nobody has told us that we don't have this right. And you're telling us. I said, yes, they may not have opposed, but that's the law. So please hear me on this. And I'd gone with full preparation on all the judgments, which talked of separation of power and how court can't, dictate what the executive should do or what the legislature should do. So when he saw that I'm fully prepared and I referred to some judgments, then he relented. And it was the front page news in all the papers of the country that central government asserts and says that no right, etc. Supreme Court. I don't know. I've not kept that, but it was the front page news of almost all the newspapers of the country. So that was another very interesting incident, where this fight on behalf of the central government, gave me a lot of visibility. And then people realized that Mr. Vikas can talk correct, regardless of whether the bench likes it or not. And that is the kind of reputation that I've lived all along in my career. Yes, very nice. और बहुत अच्छा लगा. अभी अगला सवाल है हमारा. एज SCBA सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आप करंट प्रेसिडेंट हो. बहुत अच्छा काम 1 साल में आपने किया है, हम देख रहे हैं. कोविड में भी बहुत अच्छा काम हुआ, कोविड के बाद भी अच्छा काम हुआ. कनेक्शन विथ जजेस, कनेक्शन विथ AOR एसोसिएशन, कनेक्शन विथ SCBA, कनेक्शन विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सब करते करते खुद का प्रैक्टिस, ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं और आपके इसके बारे में क्या एक्सपीरियंसेस है? देखिए, SCBA का जो मैं प्रेसिडेंट बना या जो मैं कंटेस्ट करता हूँ, वो एक मेरे मन में इच्छा है कि मैं whenever you work in any profession or you do well in life, you have to find ways of giving back. Now, one way of giving back is to pay money and do charity, which of course I also do.
But that giving back is not with your active involvement. If you want to give back to the profession, or if you want to give back to the society, you can either get into politics, or if you can get into this kind of assignment like SCBA President, etc. I'm not interested in politics, mainstream politics. I've been offered by almost all political parties. I'm not interested at all. So that's something which is a complete no for me. But at least, I mean, I live in the Supreme Court. I have got all my name, fame, wealth, everything I want from the Supreme Court. At least this much I feel I owe to my brother and sister lawyers of the Supreme Court. If I can somehow help them in their daily working in Supreme Court and be of help to them. So that is what is my inspiration of becoming the president, or working for them. And I can tell you, when this COVID thing happened, for almost 2 or 3 months, especially the second wave, we lost a large number of lawyers, and some lawyers very, very close to me, who used to come to me and sit with me even casually many times. My phone was 23 months, 24/7 on, trying to help lawyers, because there was so much of panic around. No beds available, no oxygen available, no medicines available, and it was like a complete emergency kind of a situation. Now, any person who could even call me and have access to me, and I used to try for them. Sometimes I used to succeed, sometimes even I could not succeed, in spite of the fact that I know the chairman and the hospital owners, at least of 10-12 hospitals in Delhi, big hospitals. But in spite of that, I could also sometimes not succeed. But I tried my best, tried to help them. In fact, it is such a painful task. I used to also get calls for getting them cremated, because even that was a problem. Getting somebody cremated was taking hours and hours together. You had to wait for 10-12 hours to get somebody cremated. So even helping with that, calling up somebody in the police to get them cremated, and then people thanking me for that, it was very, very shocking, the kind of period I went through. Then I realized that we have to, then I also saw the suffering of people who were not getting work because of closure of courts. So I thought that I must start the initiative. So I did the maximum contribution myself, and then exhorted the seniors. So 50 lakhs when I deposited myself, then I could, with that start deposit, I could get a total of 6 crore, which I disbursed amongst people who were without any work. And that really, carried them, for people who were really dire circumstances. Very, very great, very great, very great. Them for a year. Then I realized that if I want to save my fellow lawyers from a third, COVID, because it was definitely likely, so I must get them all vaccinated. So I got the vaccine from Poonawala at a time when nobody had vaccines. And I started vaccination in Supreme Court. And even the Chief Justice of India once commented that where did you manage the vaccine? Because Chief Justice of India could not get it for the Supreme Court staff. So he told me 2-3 months later. I said, if you had asked me, I would have got it for you as well. Anyway, so I got vaccinated by Supreme Court lawyers, their family members, their clerks family members, the juniors. Because I realized that if the entire ecosystem is not safe, nobody is safe. And touch wood, if you see, because of that, now in the third wave, very few lawyers got seriously ill, and the pandemic, they braved the pandemic without any problem. And so it was very, very heartening to be able to do something for the fellow lawyers and ensure their safety and their well-being. Ultimately, if their life is there, monetary compensation, तो देखो कोर्ट खुल जाएगा, बाद धीरे-धीरे सबका ठीक हो जाएगा. लेकिन जान भी नहीं बचेगा तो फिर क्या कर पाएगा? Yes. So all this was, apart from so many other things that we did, we, got oxygen cylinders in the association. We had the concentrators, and we were distributing that also. I'm very happy that I had a very nice team of the executive committee, who are solidly behind me, and all my executive members also, they, are party to all the initiative that we took. And we all worked as a team. In fact, I would say that all of them, most of them rather had their phones on, and they were taking calls from members and telling me wherever they required my assistance. And
I was responding to them as well. So it was a very, very difficult time, but I mean, whatever we could do, we could do. Of course, we couldn't do very much because we lost a lot of members, but yes, whatever we could, we tried to do. We felt, I feel that as president of the bar, this bar is one large family, and it's my responsibility to take care. So even I use my personal influence to try and help any member of the bar, whether it be, you know, a member who's known to me or even an unknown member. If I can help anybody, I definitely take out time and help him. And you know, it becomes a very big factor for them that there is somebody whom they can call. That I feel is very reassuring for the members of the bar. और मैंने एक खास बात देखी है कि बाकी बार एसोसिएशन जो है, बॉम्बे बार एसोसिएशन हो, गुजरात हो, सब हो, ये अलग है, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है कि पूरे भारत के लॉयर्स यहाँ पे हैं, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, सबको साथ, सबके कल्चर अलग है, सबका ये अलग है, सबको साथ लेके चलना इतना परफेक्ट। ईच एंड एवरी फंक्शन जो हम एससीबीए के थ्रू करते हैं वो भी कितने ग्रेट लेवल का फंक्शन होता है, कितने अच्छे डिस्कशंस होते हैं, ये हम देखते हैं। और आपने 2 टर्म में काम किया है, ये इट इज वेरी क्रेडिबल जॉब। सो मैं पूरे एससीबीए के मेंबर की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि आपने इतना अच्छा काम एससीबीए के माध्यम से ऑल लॉयर्स के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के किया है। बहुत अच्छी चीज है। अभी हम थोड़ा सा एंडिंग सेशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि टाइम का भी अपना अपना एक लिमिटेशन होता है, और आपको भी, आपने मुझे पहले बताया था कि मेरा ज्यादा टाइम ना लेकर के। तो अभी 3 क्वेश्चन हम लेते हैं ऑडियंस में से। ऑडियंस को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप 3 क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। खाली हाथ ऊपर करो और फिर पूछो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन एनी लैंग्वेज यू कैन आस्क क्वेश्चन, हिंदी, इंग्लिश। ऑडियंस का कोई क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है मुझे, शायद वो, हाँ, यस यस, एडवोकेट आशीष, यस, एडवोकेट आशीष वांट टू स्पीक। आशीष जी, आप म्यूट कर सकते हैं अभी खुद को। या At first, I want to pay my grateful gratitude to Mr. Vikas sir and Jayprakash Somani sir. Okay. I am practicing in Patna High Court and District Court. I am from Bihar, Patna. Sir, हमारा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग फॉल्स 498 केस के रिगार्डिंग। ठीक है, एक अभी हमारे पास लेटेस्ट FIR आया है। ठीक है, ये केस रजिस्टर्ड हुआ है SSP को। लड़की ने कंप्लेन किया 2021 में 7th मंथ को। ठीक है, मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में। ठीक है, 2021 में। और पुलिस ने महिला थाना जो होती है वुमेन सेल, वो लड़के को बॉम्बे में फोन करती है क्योंकि इसका शादी नहीं हुआ था। ये दोनों शादी.com पे मिले थे और दोनों डिवोर्सी थे। ठीक है, डिवोर्सी होने के बाद ये लोग लिविंग रिलेशनशिप को एडॉप्ट किए हैं। ठीक है, और बॉम्बे शिफ्ट हो गई लड़की शिफ्ट बॉम्बे होने के बाद एक बैग बिना कुछ बताए वहां से चली गई। चले आने के बाद 6 महीने इधर रही और अपना जो भी चीज करना था वो 2021 में ही कर दी। और अभी थाने से जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आंसर करना पॉसिबल इसलिए नहीं होगा कि ये जो है ना, बड़ा इसमें फैक्चुअल डिटेल्स है। फैक्चुअल डिटेल आप भी आशीष समझ सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर है ना, बिना पेशेंट को देखे जवाब नहीं दे सकता, वैसे ही मैं भी बिना कागज देखे ऐसे मामले में जवाब देना ठीक नहीं होगा। बट आपका क्वेश्चन मैं लार्जली बता देता हूँ विदाउट गेटिंग इनटू द फैक्चुअल कंट्रोवर्सी, बिकॉज वो इम्पॉसिबल है मेरे लिए आपसे फोन पे बात करके बताना कि 498 का मिसयूज हो रहा है। डेफिनेटली बिल्कुल हो रहा है सर, एज ए वेपन यूज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजमेंट रिसेंटली आए हैं वह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां भी इस तरह का मिसयूज हो, ऐसे केसेस को क्वैश करना चाहिए। वी शुड निप, इट शुड बी निप्ड इन द बड। और ऑफ कोर्स व्हेन यू क्वैशिंग की बात जब चलेगी तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कोर्ट को कि जेन्युइन केस गलती से ना क्वैश हो जाए। इसलिए
जो क्वैशिंग के केसेस होते हैं उसमें एक ये इस्टेब्लिश होना पड़ता है कि बिल्कुल ये झूठा केस है, और झूठा केस अगर आप क्लियरली इस्टेब्लिश कर दीजिए तो क्वैश भी हो रहा है। इसलिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको रिड्रेस मिलेगा, इसलिए आपको निश्चिंत रहिए। आज इस तरह के झूठे केस आजकल इनकरेज कोर्ट्स तो नहीं कर रहा है। सर ये वुमेन सेल का गलती है ना, फिर ये वुमेन सेल को वो चाहिए था कि 7th मंथ में आपने FIR दर्ज किया तो उसके बाद ही इंटीमेट करते हैं आप लड़के को, पर ये 5 मंथ्स का गैप क्यों आपने लड़के को फरवरी 2022 में गैप क्यों इसके लिए इंटीमेट क्यों किया? डिस्कशन ऑन यस ये सवाल आप हाईकोर्ट के सामने रखेंगे तो क्वैशिंग के लिए आसान हो जाएगा। और मेरा एक किताब है अमेज़न के ऊपर 498 एक्विटल फ्रॉम 498, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो काफी चीजें हैं, बहुत अच्छा आशीष जी आपने पार्टिसिपेट किया ये क्वेश्चन आंसर में, अच्छी चीज है। और किसी को बात करना खाली क्वेश्चन पूछिए, ज्यादा डिटेल फैक्ट्स मत बताइए, खाली इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे तो टाइम बचेगा। थैंक यू सर, मेरा तो यही क्वेश्चन था और बाकी ऐसे तो फिर बहुत है। ओके थैंक यू। दूसरे किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू जयप्रकाश जी, बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम किया। आप ये नानी पालकीवाला के नाम पे आप कुछ कर रहे हैं, दिस इज इटसेल्फ अ वेरी heartening thing. He is a legal legend of this country, and doing anything in his name it's a matter of pride for anybody to be associated when his name comes. So I would like to thank you for taking this initiative. सर मैं एक ऐड करना चाहता हूं कि काफी स्टोरी मिलती जुलती है आपकी और नानी पालखीवाला जी की। नानी पालखीवाला को भी लॉयर नहीं बनना था, उनको इंजीनियर बनना था, लेकिन वो गलती से लॉयर फील्ड में आ गए, लेकिन भारत के एक एमिनेंट लॉयर बन गए। तो बहुत सिमिलैरिटी लगी। एक आखिरी अभी एक पार्ट है हमारा कि आपको भारत के और भारत के बाहर जो भी लॉयर इसको देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से, ये सब लॉयर के लिए कुछ संदेश देना है और बाद में लॉ स्टूडेंट के लिए कुछ संदेश देना है, ये मेरी प्रार्थना है। देखिए, जहां तक लॉयर का सवाल है या लॉ स्टूडेंट का सवाल है, संदेश दोनों के लिए सेम ही है कि ये प्रोफेशन, देखिए मैं जयप्रकाश जी, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर, जैसे आपको शुरू में मैंने बताया था, और आज से 90 में स्टार्ट किया। इस जर्नी में जो मेरे को सफलताएं मिली हैं वो सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि मैं शुरू से अपने काम में कोई मतलब वो नहीं की, कमी नहीं की, रिसर्च में कमी नहीं की। और जहां तक क्लाइंट का सवाल है, क्लाइंट का दर्द समझ करके उसको रिलीफ दिलाने का कोशिश किया। तो जब वकील जब बनते हैं आज के दिन में, तो ज्यादातर तो बच्चे चले जा रहे हैं लॉ फर्म में, क्योंकि लॉ फर्म में इनिशियल स्टार्ट अच्छा मिलता है। इनिशियल स्टार्ट हमारे लीगल प्रैक्टिस में अच्छा नहीं है, दिस एवरीबॉडी नोज। लिटिगेशन में इनिशियल स्टार्ट बहुत ही पुअर है, इसलिए वो इनिशियल स्टार्ट से बचने के लिए ज्यादातर लॉ फर्म में चले जा रहे हैं। बट मैं कंपैरिजन ये करता हूं कि आप अपना इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं या आप किसी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, एम्प्लॉय बन के रहना चाहते हैं, फर्क इतना ही है। लेकिन अपना इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको बहुत कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। आपको लिटिगेशन में क्लाइंट से भी मिलना है, रिसर्च भी करना है, ड्राफ्टिंग भी करना है, बहस भी करना है, और अपना फैमिली भी चलाना है, फैमिली के लिए टाइम भी निकालना है, दोस्तों के लिए भी टाइम निकालना है। तो इसलिए इतना कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होता है लिटिगेशन में कि उस कोऑर्डिनेशन से जो निकल जाए सक्सेसफुली, सब सारे अपने टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन सही करके एक सब काम कर ले, तो वही अल्टीमेटली सक्सेसफुल होता है। क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि अपने काम में इतना भी ना, डोंट गेट सो इन्वॉल्व इन योर वर्क दैट यू मिस आउट और यू लूज आउट द वेरी थिंग्स और द वेरी पीपल फॉर हुम यू आर वर्किंग। इसलिए कहीं ना कहीं वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और लॉयर के प्रोफेशन में तो बहुत ज्यादा है कि शुरू में तो बहुत ही ज्यादा, मेरे को याद है मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरी वाइफ लेके जाती थी हॉस्पिटल बच्चों को, मैं जा भी नहीं पाता था। सर प्लीज से वंस अगेन, क्या वंस अगेन? जो आपने कहा कि फैमिली को भी टाइम देना चाहिए और ये अपने काम के ऊपर वो वाला जो स्लोगन आपने बोला ना, सबका एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि रिसर्च, अब आप रिसर्च इतना ना करते रहिए कि मैटर का कॉल आउट हो जाए, आपका रिसर्च ही कंप्लीट ना हो। मैं अपने जूनियर्स को कहता हूं कि रिसर्च ऐसे टाइम पे होना कि जब आप उसको यूज कर पाइए बहस के दौरान। अगर बहस के पहले आपका रिसर्च ही कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या फायदा उस रिसर्च का। उसी तरह से ड्राफ्टिंग,
ड्राफ्टिंग में इस तरह से ड्राफ्टिंग का तो 2-3 मेरा बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है जो मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि कोई भी फाइल आए आपके सामने, पहले पढ़िए उसको और समझिए उसके प्रॉब्लम को, और उसके बाद बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो क्लाइंट ने फाइल में आपको दी नहीं होंगी, जब आप उससे सवाल पूछेंगे तो निकाल के देगा वो। तो उससे जो सवाल आपको आपके इंपॉर्टेंट लगता है उसके केस के लिए वो पूछिए। जब सारे चीज आ जाए तब ड्राफ्टिंग स्टार्ट कीजिए, और सबसे पहले एक लिस्ट और डेट बनाइए इवेंट्स का, तो आपको पता चलेगा कैसे ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा है, और उसी के बेसिस में अपना केस। तो आपका जब जज आपका लिस्ट और डेट पढ़ता रहेगा तो पढ़ते पढ़ते उसको समझ आ जाना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर क्लाइंट का क्या प्रॉब्लम है। तो वो ड्राफ्टिंग लिस्ट और डेट एक डिस्पैशनेट तरीके से ना हो, बट एक ऐसे इन्वॉल्वमेंट के साथ हो कि जब लिस्ट और डेट पढ़े तो उसका एक ड्रिफ्ट ऐसा हो कि वो ले जाकर दिखा दे कि हाँ ये प्रॉब्लम है। इसलिए ये सब कुछ बातें हैं जो कि मैं लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा, और ये मैं मानता हूं कि शुरू में थोड़ा बहुत फ्री काम करना चाहिए, क्योंकि फ्री काम में ही आपको मौका मिलता है एज अ यंग लॉयर काम करने का, क्योंकि आपको नए लॉयर को काम कौन देगा शुरू में। और अगर आप फ्री काम में अच्छा करेंगे और अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे और अच्छा मेहनत करेंगे, तो जिसका आप फ्री करते हैं काम वो कहीं ना कहीं आपको कंपनसेट करने की कोशिश करता है, या तो दूसरा केस पेड केस देख करेगा या किसी और माध्यम से करेगा। तो इसलिए, लेकिन अगर आपका काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है तो शायद नहीं करेगा, फिर दोबारा आपको देगा, फिर फ्री केस भी नहीं देगा। इसलिए कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा उसमें एक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अपना स्टील अथॉरिटी डेज का, कि ऑडिट पैरा में जो जवाब मैंने सोचा वो जिसने किया था काम उसने भी नहीं सोचा था। तो कभी ना कभी आपको इतना ज्यादा आगे बढ़ के सोचना पड़ता है क्लाइंट को रिलीफ दिलाने के लिए। तो इसलिए वो, और कई बार क्लाइंट नहीं सोचते हैं बहुत सी बातें या बहुत बातें नहीं बताते हैं, तो इसलिए वो सारा एक बड़ा ही एक मिक्स है ये इस प्रोफेशन में, और उस मिक्स में बैलेंस करके चलना इज द रियल सीक्रेट ऑफ सक्सेस, आई विल से। थैंक यू जयप्रकाश जी। मेरा एक सवाल है, बहुत से लोग जूनियर लोग मेरे पास आते हैं, अरे ये प्रैक्टिस में बहुत पैसा है, ये प्रैक्टिस में बहुत पैसा है। बोला तुम पैसा देखोगे, यू विल नॉट प्रैक्टिस इन लाइफ थ्रू आउट योर लाइफ, यू नेवर लाइफ। ऐसा है वो, कोई ये हो गया, बोला जहाँ ये इधर जाता वो कोर्ट में जाता वो कोर्ट में जाता हूँ, अरे बोर होता है। बोर हो गया, तुम प्रैक्टिस क्या करोगे? और तुम बोलते पैसा इसमें है उसमें, अगर तुम पैसा देखकर प्रैक्टिस करोगे यू विल नॉट एबल टू प्रैक्टिस एट ऑल। वो बेचारे अभी यू कॉन्सेंट्रेट इन द सब्जेक्ट वेयर यू आर इंटरेस्टेड, तुमको सब सब्जेक्ट वेग लग रहा है, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड you have to go in one particular field, catch that law, उसी में आप पैशनेट करो, मेहनत करो, फिर पैसा अपने आप आएगा। तुम पैसे के पीछे भागोगे, एडवोकेट नहीं हो पाओगे। जयप्रकाश जी वही बोला था थोड़ी देर पहले, एग्जैक्टली ऐसा। तो ये अभी मेरे को रिसेंटली 2-3 जन आए थे, पैसा पैसा, बोला नो, यू हैव टू वर्क हार्ड। एक्सपीरियंस है। दोस्तों हम थोड़ा विकास जी को विदा करते हैं, और थोड़ा बने रहिए, मैं थोड़े अगले प्रोग्राम के बारे में भी बताऊंगा आपको। आशुतोष जी वेरी वेरी धन्यवाद यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए, मिलते रहेंगे और कभी आपको और भी बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये वेडनेसडे लॉ क्लब है, एवरी वेडनेसडे को आपको कुछ ना कुछ इवेंट मिलेगा। नानी पालखीवाला वेडनेसडे लॉ क्लब है, ये ऑनलाइन ही रहेगा ताकि भारत के और भारत के बाहर के सभी लोग इसका आनंद लें। और ये रिकॉर्डेड वीडियो बाद में हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, यूट्यूब से भी देख पाएंगे। मेरा कल परसों में आर्गुमेंट के लिए गया था सुप्रीम कोर्ट में, मुझे मेरे फ्रेंड कपिल सिब्बल जी भी मिले, कपिल सिब्बल जी के साथ बात हुआ है, उनको सब मैंने भेजा है। अगर आ गया उनका टाइम तो ये अगले वेडनेसडे को होगा या उसके अगले वेडनेसडे को होगा। तो ऐसे हर वेडनेसडे को आपको एक अच्छे ग्रेट पर्सनालिटी के साथ मिलना होगा, अच्छा उनका एक्सपीरियंस सुनना है, और बहुत बढ़िया ढंग से हमको हमारे लीगल प्रोफेशन की जो नोबल प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन को पूरे भारत के लोगों की सेवा के लिए लगाना है, ये हमारा इसके पीछे का पर्पज है। दोस्तों अगले बुधवार को खाली टाइमिंग थोड़ा सा चेंज रहेगा, अदरवाइज यही टाइम रहेगा हमारा जो आज का है 7:05 का। लेकिन अगले बुधवार को थोड़ा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो हमारा फ्लाइट थोड़ा लेट पहुंचेगा, तो 8:30 बजे से 9:30 बजे तक का ऐसा अगला बुधवार का टाइम है, क्योंकि मैं किसी भी बुधवार को इसको ब्रेक देना नहीं चाहता। एवरी बुधवार को हम इसको लेना चाहते हैं, तो ताकि भारत के अच्छे रिटायर्ड जजेस हो, लॉ मिनिस्टर्स हो, अलग अलग स्टेट के लॉ मिनिस्टर हो, सीनियर लॉयर्स हो, एवार हो,
या रामचंद्र मांधानी जैसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं ये हो, ऐसे अलग अलग पर्सनैलिटी को हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, वंदे मातरम। जयप्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। जयप्रकाश जी, आप महेश्वरी हो? जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैं भी महेश्वरी हूँ। कल्याण मुंबई। यस यस। मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सिंस लास्ट 33 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। मैं भी बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले करता था, असिस्टेंट में था, और बॉम्बे हाई कोर्ट से फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हुआ, और अभी पूरे भारत के ये फैमिली मेरी पुणे में ही रहती है, लेकिन थोड़ा सा फैमिली का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा काम है। खाली इतना मैं बताता हूँ सबको कि सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस इज डिफरेंट देन एनी अदर कोर्ट प्रैक्टिस है, लेकिन ट्रायल कोर्ट का, हाई कोर्ट का अगर एक्सपीरियंस आपके पीछे है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस भी आसान हो सकता है। इसलिए अपने अपने जगह पे प्रैक्टिस करो, 3-4 घंटा रोज पढ़ने की आदत डालो, सोते समय एक आधा तो भी जजमेंट आप डेफिनेटली पढ़ो, और सुनो, जजमेंट शॉर्टली भी पढ़ सकते हैं, जजमेंट के पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सोते सोते एक आधा जजमेंट पढ़ने की अगर आपको आदत है तो आप बहुत अच्छे लॉयर बनेंगे। सबको मेरी ये शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। नंबर डाला हुआ मैंने। थैंक यू।